Hello students, today we will continue chapter 1, that is computer language. In our previous class we have discussed about machine language, assembly language, high level language and fourth generation language. Today we will talk about types of computer. So there are various types of computer according to their size, cost, usage. First we will talk about microcomputers. So, the computer which we use at our homes, offices, banks, school, these are mainly microcomputers. Microcomputer are small in size and cost less. They are usually designed for personal use. So that's why they are also known as personal computer, PC. They are mainly used at homes, school, offices, banks, etc. And these are of various type: desktop, laptop, handheld. Everything that you can hold in your hand is handheld. Okay, so and examples are Commodore 64 and IBM PC. So these computers are given different name according to their usage. जैसा इनका यूसेज होता है उसके अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट नेम देते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंडहेल्ड. And many examples are there. Few examples I have given. So we will move forward to next computer, that is mini computer. Mini computers are bigger in size than that of microcomputer. They are bigger in size in comparison to microcomputers. They have a higher processing speed and are costlier than माइक्रो कंप्यूटर. ये माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में इनकी हाई स्पीड होती है एंड दे आर ऑल्सो कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर्स. सेवरल यूजर्स कैन यूज इट एट द सेम टाइम. इन mini computers, many user can use the same computer at the same time. In microcomputer we cannot do that. Only one user can use microcomputer at the same time, but in mini computer many user can use it at the same time. So basically these mini computers are used in bank, university and big organization. ये जो मिनी कंप्यूटर हैं ये माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में इनकी साइज़ ज़्यादा है एंड इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए दैट्स वाई दे आर costlier than microcomputer, and they can be used in banks, university and big organization because several user can use it at the same time. That's why big organization uses these types of computer. An example are PDP-8 and VX and many more are there. Next is mainframe computer. These computers are very powerful and they are big in size with large memory and high speed. They are basically designed to tackle huge amount of data. माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर के कंपैरिजन में मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी पावरफुल. इनकी ज़्यादा स्पीड है, लार्ज अमाउंट की मेमोरी है और ये ह्यूज डाटा को इजीली टैकल कर सकते हैं. ये डिज़ाइन ही इसलिए किए गए हैं ताकि ये ह्यूज डेटा को टैकल कर पाएँ. एंड मोर देन 100 यूज़र कैन यूज़ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर साइमल्टेनियसली. एक ही साथ around 100 users can use it. They are used in networked area. एक network environment में use किए जाते हैं. These computers are very expensive and can be used in large business organization, universities, bank, scientific laboratories, airline, railway ticket reservation, stock exchange market. सो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एंड बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को टैकल करने के लिए होते हैं. दैट्स वाई जो बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, बैंक्स ये सब होते हैं वो ही मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. एन एग्जांपल है IBM Z सीरीज़, PDP-10 एंड सिस्टम Z10.
Now we will move forward to supercomputer. Supercomputers are the most powerful computer with a huge processing speed. In comparison to microcomputer, mini computer, mainframe computer, supercomputer are the fastest computer and they have huge processing speed. Processing speed है इनकी बहुत ज़्यादा, that's why they are fast and ये बहुत large amount of data they can store. These computers are used for weather forecasting, स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट कंट्रोल एट्सेट्रा. तो ये जो बड़े बड़े चीज़ें हैं, बड़े काम हैं, उनके लिए ही सुपर कंप्यूटर्स आर यूज, लाइक वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट कंट्रोल. एंड एग्जाम्पल्स आर क्रे 1, क्रे 2, परम, ETA, A10, सनवे, ताह्यू लाइट. Okay, and one more thing I want to tell you that this is Summit. It is the fastest supercomputer till June 8, 2018 and it was developed by IBM. IBM ने ये Summit जो सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था वो फास्टेस्ट कंप्यूटर है बट टिल 2018. अभी जो सबसे पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है दैट इज़ फुगाकू and it was developed by Japan and it is the fastest computer in the whole world currently in till November 2020. Okay.